हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल किंग। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूएसबी को बूटेबल कर सकते हैं, वो भी कोई सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए बगैर। सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, एक यूएसबी और दूसरी विंडो की आईएसओ फाइल। सबसे पहले अपनी यूएसबी को फॉर्मेट कर लें। इस तरीके से आप कोई भी विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 7 हो, 8 हो या 10। फॉर्मेट करने के बाद फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें और बूट फोल्डर में जाएं और इस exe फाइल को कॉपी कर लें और यूएसबी में इसको पेस्ट कर लें। राइट क्लिक करके ओपन एडमिनिस्ट्रेटर करें और इसे डिलीट कर दें और बाकी फाइल को सबको कॉपी करके यूएसबी में पेस्ट कर लें। कॉपी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसलिए इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। See you on the other side. Stay alive. Stay alive. Ooh, I got to keep it together. Keep it together. I got to keep it together. Keep it together. Keep it together. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. I got to keep it together. Keep it together. Keep it together. Keep it together. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. Ooh, I got to keep it together. Keep it together. I got to keep it together. Keep it together. Keep it together.
काफ़ी होने के बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें और बूट की को दबाएं। बूट की दबाने के बाद यूएसबी को सिलेक्ट करें और इंटर दबा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। I got to keep it together, keep it together.